S-H-I-P, ship. Lid, L-I-D, lid. Children, you have to paste the sticker of tin, tip, ship and lid. And the sticker are there on the last page of your textbook. आप सभी को यहाँ पे स्टिकर चिपकाना है. वर्ड्स एंड टिप, टिन, शिप एंड लिड. और इसका स्टिकर आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे. गॉट इट? Find and cross the raspberries containing I sound words. Children, in this you have to cross that word जिसमें I का sound आता है. Right? Suppose for example the word is given kit. K-I-T, kit. तो क्या इसमें I का sound है? Yes, it is there. Then we will cross that raspberries. The next word is sip. S-I-T, sip. The word is given sip और इसमें I का sound है. Then we will cross it. हमें उस word पे cross करना है जिसमें I का sound आएगा. The next is zip. Z-I-P, zip. Then we will cross it. क्यों हमने cross किया? Because I का sound था. The next word is tin. T-I-N, tin. Sound of I है ना इसमें? Then we will cross it. The next word is wig. W-I-G, wig. Then we will cross it क्योंकि इसमें I का sound है. Remember children, हमें हर एक word को ध्यान से read करना है और हमारे mind में होना चाहिए कि जिसमें I का sound होगा वही word हम cross करेंगे. Okay? The next word is cap. C-A-P, cap. Cap में I का sound आ रहा है. सोचो. C-A-P, cap. I letter है? नहीं ना? Then we will not do anything. हम इसमें कुछ नहीं करेंगे. We will leave as it is. हम ऐसे ही छोड़ देंगे. The next word is red. R-E-D, red. Shall I cross red? Tell me. No. Why? Because इसमें I का sound है नहीं और ना ही इसमें I लिखा हुआ है ना? एक सिंपल ट्रिक है. आप वर्ड रीड करोगे और जिसके बीच में I वर्ड आएगा उसे आप क्रॉस कर दोगे. ओके? In this way you have to do it by yourself. आप लोग इसे वर्ड को रीड करोगे एंड रिमेंबर, ध्यान रखना, जिस वर्ड में I आएगा उसे आप क्रॉस कर दोगे. ओके? Read and write. Children, you have to read this rhyme. Okay? आप सभी मेरे साथ रीड करोगे. Right? Sing the rhyme aloud and once again sing the rhyme aloud and
Then